So where were you born, brought up, and how did you come to Raipur? Thank you. I am actually from Andhra Pradesh. Shreya? Yeah, please. I am from Andhra Pradesh. I was born in Kanpur and brought up in Delhi. My entire schooling and college was in Delhi. St. Xavier School, Delhi, then Hindu College, Delhi University. Then I had done my Masters in Business Economics from South Campus, Delhi University. I was always interested in theatre, music, and my original gurus were Paramveer, Barry John, and I acted at National School of Drama. Wow. And with Pankaj Kapoor, I was. It was fascinating working with all those people and attending all those music theatre workshops and variety of plays. तो लेकिन मेरा इंटरेस्ट वो था, बट हमारे फैमिली में सब ब्यूरोक्रेट्स थे. आधे लोग IAS में डिफरेंट सर्विसेज. तो मेरे फादर बहुत कीन थे कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए अपेयर करूं, जो मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था. Okay. So after my post graduation, I worked for a year with the World Bank. उसके बाद I was with the Cement Manufacturers Association and FICCI. तो उस दौरान फिर मैंने ये एग्ज़ाम दिया of the IAS, and I was selected for the Indian Police Service, but family was not very keen that I joined, my father especially. Okay. My uncle, no more, he was from the Indian Civil Service, जो मतलब it was before the IAS. So instead of joining IPS, I joined the Indian Railway Traffic Service, and life took a turn. My first posting was at Ambala, and I worked for 5 years and saw terrorism at its peak at Ambala. And thereafter I worked on 8 zonal railways, and I was with the Military of Defence at Milrail, where I was conferred with the Chief of Army Staff medal. As a civilian, it's a very prestigious award. Wow, that sounds so awesome. Normally given to all military people. But then what happened was I became an alcoholic. Okay. I'm confessing it. And for pardon? And you're confessing it. Okay. So for almost, I'm grateful to my wife and my mother, grandmother, who prayed so much for me. So almost 16, 17 years I was an alcoholic. And it's remarkable that, it was how they prayed for me. That's when I had done my first course of Art of Living. तब मैं जयपुर में पोस्टेड था, और 2006 December 9th was my last drink. And touch wood, तब से I have been. So that's where the transformation journey started. Transformation journey started. Wow. And उसके बाद क्या हुआ कि मैंने, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट हमेशा ये था, अपने लाइफ के बारे में लिखना शुरू किया. And I showed those articles to Gurudev Sri Ravi Shankar, and he said, Ravi, you keep writing, soon your books will be published. Wow. And it so happened, and my first book, The Matter of the Mind, जो उसमें आया है, that was released by Gurudev himself on the Navratri day at Bangalore Ashram, in front of about 50,000-60,000 people. Awesome. So that was a great feeling to be sharing the stage with Guruji. मतलब millions of people across the world, यहाँ Art of Living के लोग हैं. हाँ. और वो जानते हैं कि गुरुदेव से मिलना ही और आपका कितना बड़ा सौभाग्य that you were there. He released my book. Awesome. और उसके बाद मैंने लाइफ पॉजिटिव मैगजीन के लिए लिखा, फ्री प्रेस जर्नल, साक्षी पोस्ट, और इट्स ऑल हिज ब्लेसिंग्स कि एक के बाद एक किताबें छपती गई. और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब पे भी लिखा है, देन गुरुजी पे भी लिखा है. और ये पहले नॉन फिक्शन लिख रहा था, फिर फिक्शन लिखना शुरू किया. 3 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं मैंने.
Darshan ji hain, so I'll discuss with them what can be converted into OTT if they're worth it. Okay. Definitely. It so happened that the first fiction was Heartbreak at Coffee Shop. And दूसरा था And that name really attracted me when I saw those books that sir has written, that Heartbreak at Coffee Shop, and then the second one was A Tale of Parallels, and this one Bombay Review and Other Stories. These are all short stories. I wrote a spiritual fiction that was a very unique story about a Chinese woman, her journey, how she comes to India. That's called Art of War to Art of Living. Yes. So the name itself, Art of War to Art of Living. Art of War is Sun Tzu's Art of War and how she joins Art of Living. Now my journey to Raipur is that after my tenure in the Indian Railway, I appeared for this interview as the CEO of Chattisgarh East Railway Limited and Chattisgarh East West Railway Limited. About 150 million tons of coal would be transported. So that, and grateful to my wife who has edited my books, and all of you. Thank you so much, sir. Thank you. So when you mentioned that you were an alcoholic, and then because of art living that transformation happened, and then when Guruji said that you should write, so आपने ये भी mention किया इसमें that you were always keen to write. So how was the writer born in terms of, sir said, but then how was it the initial days when you wrote your first book? How was it? How was those days, if you can share with us? जब आपने पहली बार actually लिखना चालू किया? नहीं, देखिए, मैंने जैसे बताया था, मैं सेंट ज़ेवियर स्कूल में लिखता था. तब कुछ पब्लिश नहीं हुआ था, बट आई यूज्ड टू कीप राइटिंग. Okay. माय फादर एक बारी पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए आए थे, तो तब जो हमारी इंग्लिश टीचर थी, उन्होंने कहा लेट रवि रीड बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, ही हैज़ दिस पाशा फॉर राइटिंग. तो उस समय मैंने सी राजगोपालचारी के रामायण एंड महाभारत पढ़ा, एंड वेरियस ऑटोबायोग्राफीज. दैट्स हाउ आई बिगैन विद ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज. यहाँ जो है, जो पहली किताब थी, उसमें मैंने जितने भी मेरे इंसिडेंट्स जो हुए थे लाइफ में, उस सबको कंपाइल करके लिखा था. तो और अन्य लोगों का जो इस पीड़ा से गए हैं, लोग अल्कोहलिक्स को, मतलब द वे दे ट्रीट, एक्चुअली इट्स अ डिजीज़, एंड ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज माइंड. हमारे न्यूरो सर्जन साहब भी हैं. तो how he becomes sucked in that cesspool, he has no idea at all. And people start calling them a lot of things, and yes, they would just they are the audience, so they address that person with a different yes, intellect, and they would not respect that person, and that person usually is taken out of the society. Yes, you're right. When I was posted as the Principal Chief Operations Manager, Northeastern Railway, Gorakhpur, I had conducted a lot of programs for alcoholics and drug addicts, and that was a big experience. Very few people perhaps are aware that there are almost 20 million alcoholics and drug addicts in India, and they need a lot of care, and I myself was hospitalized, and I had faced those problems. But I think all that has helped me to grow as an individual and in my writings. So what Buddha says, and which I have used here, that life is not all white or black. There's a big grey shade. तो ये जो grey shade है of human personality, उसके ऊपर ही ये किताब आधारित है, और मैं उसी के ऊपर लिखता हूँ. और ये जो लाइफ में बहुत peaks and valleys आते रहते हैं, और nothing is permanent. Exactly. The only permanent thing is impermanence, as Buddha says. So that are some of the things which I have worked on. Thank you so much. There is just one constant in life, which is the inconsistency. So thank you for mentioning that. Sir, now I come to the next question. How has your journey been in writing this particular book? And when you were writing about Bombay,
because the name itself and the cover is very exciting. So if you can just mention a little about जो इसके पात्र हैं. मैंने इसके पहले 2 फुल लेंथ नॉवेल्स लिखे थे, आर्ट ऑफ वॉर टू आर्ट ऑफ लिविंग, और एक मेरी ऑटोबायोग्राफी वो भी है, स्टोरी ऑफ फेथ एंड मिरेकल्स. तो आई डिसाइडेड टू राइट सम शॉर्ट स्टोरीज जस्ट टू स्विच गियर्स. मैंने कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स देखे थे, प्लस सम व्हाट्सएप मैसेजेस एंड ऑल दोज थिंग्स कंबाइंड. Then I decided to write drabbles and short stories. Now drabble जिसके मास्टर हैं जेफरी आर्चर. Yes. एक 100 words में एक कहानी लिखना, तो वो एक बहुत बड़ा आर्ट है, और सर ने वही लिखी हैं. तो 22 वो हैं, और उसके अलावा बाकी शॉर्ट स्टोरीज हैं. तो उसमें आई थिंक अमिताभ बच्चन और उनके फादर ने भी बोला था कि सब कुछ लिखा हुआ है, एंड इनडायरेक्टली उन्होंने रेफरेंस रामायण एंड महाभारत का ही दिया. और वो एक बहुत बड़ी पूंजी है इस देश की, और हमारी विरासत है. तो हम तो सिर्फ इंटरप्रेट कर सकते हैं उसको. एंड आई हैव टेकन दैट इन द प्रेजेंट डे टाइम्स, whatever events have occurred relating them to Ramayana, Mahabharata. I have been greatly influenced by Zen and Zen philosophy. Apart from, of course, art of living is the basic thing. Yes. Every day I read those who are not there. In art of living, गुरुदेव ने जो एक उन्होंने किताब लिखी है, sincere note to a sincere seeker and celebrating silence. Yes. वो मैं रोज पढ़ता हूँ. उससे रोज कुछ ना कुछ नया आइडिया आता है. And that's all. That is it. जैसे इसमें I'll read a few passages as we go. Sure. So how I came across, जैसे एक headline पढ़ा, I thought this deserves to be converted into a drabble or a short story. So thank you so much. So this book, so I was also reading, Priyanka ne mentioned कि I'll just read one thing and then we'll go to the next question. So telling the story to oneself is a way to share the values that define who you are. So we keep, our mind keeps telling us stories throughout the day, and we can actually ask the mind whether to keep shut or keep going on. We can work on that, not as abstract principles, but as lived experiences. We construct stories of self around choice point, moments when we faced a challenge, made a choice, experienced an outcome, and learned a morale. So when I read this, just stayed with me, because this is what I keep talking about, that it's just a choice. Life is happening to you, or you're making life happen to you. There's a difference. आप पात्र हो उस मूवी के, या आप ऑडियंस हो. You can choose. You can decide in that particular moment. It's just a matter of choice. How are you treating your life in this particular moment? Thank you. Over to the next question. You've been married for so many years, and you're blessed to have Lakshmi ji as your life support partner. So how has it been, when you were there at times and you were traveling, and the journey that you had while you were an addict? How were you as a husband, if you can mention that? I think that she can मुझे पता मुझे मार पड़ेगी बाद में, but I think you can mention, and then we'll talk to ma'am also later. No, I think she has enormous patience. बहुत ज़्यादा patience है to. मतलब लोगों के घर टूट जाते हैं, कोई alcoholic हो या drug addict हो. I've been blessed, I would say, to have her as my wife. And मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि वो एक आपको 2 इंसिडेंट्स सुनाता हूँ. क्या हुआ कि हमारा एक प्रोग्राम होता है आर्ट ऑफ लिविंग में, एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम. तो मैं वो कर रहा था, और मेरे साथ, और हम उसमें 4-5 दिन साइलेंस में रहते हैं. तो मेरे साथ एक और व्यक्ति बैठा था, यंगस्टर फ्रॉम हैदराबाद. तब मैं हैदराबाद में पोस्टेड था. तो गुरुजी हमारे सबसे मिल के जा रहे थे. तो आई टच्ड हिज फीट एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. एंड फिर वो भी रोके गुरुजी के पाँव छू के कहा कि थैंक यू गुरुदेव. तो वो आगे गए गुरुजी. तो ही जस्ट टर्न बैक, और उन्होंने एक शब्द बोला, रवि, शेयर योर स्टोरी विद द वर्ल्ड. तो दैट्स व्हाई आई एम ओपनली सेइंग दिस. देन आई आस्क्ड हिम, व्हाई आर यू क्राइंग? So he said, sir,
आई वाज एन अल्कोहलिक। तो मतलब 1000 की भीड़ में ये एक चमत्कार ही है कि ये 2 अल्कोहलिक साथ बैठे साथ में थे और फिर ये ज्ञान मिला आपको। और ये गुरुदेव भी कर सकते हैं। गुरुदेव ही कर सकते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, मतलब लोग सोचेंगे ये मजाक है, लेकिन मैंने अपनी पहली किताब में लिखा था मैटर ऑफ माइंड में। एक जगह है आंध्रा में, तब मैं सीनियर डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर गुंटकल था। दैट्स अ पोस्ट वी होल्ड इन जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। तो मंत्रालयम एक बहुत महान संत थे, जो अभी भी जीव समाधि में है। He is still in जीव समाधि, राघवेंद्र स्वामी। इनफैक्ट एक लीनियज है, हनुमा भीमा माधवा राघवेंद्र। हनुमान जी, फिर हनुमा भीम, फिर माधवाचार्य और राघवेंद्र। तो मैं अपने आंटीज के साथ गया था वहाँ, और आफ्टर सर्कम्बुलेटिंग हिज श्राइन, तो मैं मतलब उस इतनी पवित्र जगह में अपने साथ एक बॉटल ऑफ जिन ले गया था। तो अब वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि अब ये आएगा, हम खाना वाना खाएंगे, और बार बार मैसेज आ रहा था। तो मेरा दिमाग उस बॉटल पे था। तो मैंने कहा मैं अभी नहा के आ रहा हूँ, एंड मैं अपने कमरे में घुसा। इट वॉज स्टिंकिंग, एब्सोल्युटली स्टिंकिंग। आई वाज स्टिल एन अल्कोहलिक, दो आई हैड डन द कोर्स बाय देन, आर्ट ऑफ लिविंग का। तो मैंने अंदर गया, मेरे साथ 2 इंस्पेक्टर्स थे हमारे साथ, जो मैं पूरा कमरा स्टिंक कर रहा था और पूरा कारपेट गीला था। तो आई ओपन माई बैग, एवरीथिंग वाज ड्रेंच्ड। तो मैंने वो बॉटल निकाली, जिन की बॉटल, जिसमें ना क्रैक था ना सील टूटा हुआ था, लेकिन एक ड्रॉप ऑफ जिन नहीं था। सारा मतलब कारपेट पे आ गया। द ओनली थिंग विच वॉज अनटच्ड, बिल्कुल सूखा था, वॉज माई पूजा मटीरियल, जो मैं पूजा करता हूँ, जिसमें हनुमान चालीसा था और सुदर्शन क्रिया के नोट्स। तो तब मेरी आंटी और यहाँ बघेल साहब भी हैं, वो भी आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं, तो जो ये प्रोग्राम करेगा वो महसूस कर सकता है क्या है। तो दे केम एंड सेड, नाउ रवि, दिस इज अ सिग्नल दैट यू शुड स्टॉप। तो जब मैंने गोरखपुर में क्लासेस लिए थे, मतलब आपको बता नहीं सकता, वो मेरे पाँव पड़ गए कि सर आप छोड़ के मत जाइए, प्लीज़ हमको छोड़ के मत जाइए। तो मतलब पहले उन लोग रेफरिंग टू आई गेस जिन ड्रग एडिक्ट्स की सर ने क्लासेस ली थी, जब क्लास ले रहा था। एक और इंसिडेंट, 2 इंसिडेंट्स। आई वाज पोस्टेड एज द चीफ फ्रेट ट्रैफिक मैनेजर एट गुवाहाटी। तो क्या हुआ कि मैं वहाँ के जो स्वामी थे, इंचार्ज ऑफ द आश्रम, पांडु आश्रम है, बहुत ही बढ़िया आश्रम है आर्ट ऑफ लिविंग का, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है एंड फुट हिल्स ऑफ कामाख्या टेम्पल। तो उन्होंने कहा कि रवि जी आप ऐसा करिए कि एक जो चीफ मैनेजर था आईटीडीसी का, कि ही वॉज एन अल्कोहलिक, कि आप उसको जाके काउंसिल करिए। तो मैं रोज़ करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि हम जैसे निकले, वी वर ब्लाइंड फोल्डेड। आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा ब्लाइंड फोल्ड क्यों कर दिया, और हमको अंदर ले गए। उस कमरे में आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जब हमारे निकाले वो ब्लाइंड फोल्ड, 6 लोग बैठे हुए थे विद AK-47। तो मैंने कहा ये क्या, कहाँ आ गया, गॉट स्कैर्ड। और उसमें आप लोग, you have to believe because it's a fact, it was none other than Paresh Barua, chief of Alpha. तो I was so shocked। तो स्काइप कॉल पे उसने गुरुजी से बात की कि 400 पीपल अब आर्म्स छोड़ना चाहते हैं, दे वांट टू कम टू द मेन स्ट्रीम। तो I was made an instrument to transport 400 people to Bangalore ashram, and they had given up arms. So I thought it was such a, I mean, great सेवा, किस तरह the master does it. मेरा बैचमेट, he was IGP law and order. So he said, Ravi, I need your help. There are some 600-700 widows and orphans जो टेरर वायलेंस से इफेक्ट हुए हैं, तो प्लीज़ कम एंड डू समथिंग फॉर देम। तो हमने एक होता है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम, जो वैसे भी होता है, वो आर्ट ऑफ लिविंग में है। तो आप बिलीव करें ना करें, हमने 4-5 राउंड्स बार बार कराए, और जो 6 महीने तक बोले तक नहीं थे,
ऐसे रोए, मतलब उनकी सारी ग्लानी बाहर आ। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है। और सर आपने तो मतलब कहना, आपने डेथ को बहुत क्लोजली भी एक्सपीरियंस किया इस सब में, एंड द फियर यू नो इन ऑल दीज, बट इट्स कमेंडेबल दैट ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड सो मेनी पीपल टिल डेट। नहीं, वो आर्ट ऑफ लिविंग में तो बहुत लोगों ने किया, और मेरे ख्याल से नॉट बाकी जो भी इस फील्ड में हैं, तो राइटिंग के माध्यम से आई हैव ट्राइड टू रीच। वन ऑफ द ग्रेट थिंग वाज, एक बारी मैं तब मैं साधन रेलवे में पोस्टेड था, मैं त्रिवेंद्रम गया, सडनली समबडी केम टू मी और मेरे किताबें लेके कहते सर प्लीज साइन ऑन इट। तो मैंने कहा अच्छा, आई साइन। सर आफ्टर रीडिंग योर बुक मैंने कोर्सेज किए हैं। तो मैंने कहा वाह यार, इट्स good, nice to know that. Great. Thank you. So I move to the next question. Do you try to be like very original when you deliver your content? As you mentioned, you take references, but however, to connect to the youth, to connect to the different age of people. So how is it? What is your thought process when you write? Well, this book is for anybody 17 and above. So definitely youth and all sections you try to address. I try to connect, and those who are interested, like this has stories of love, romance, then stories of lust, then about murder, then mysteries. तो उसमें मैंने पूरा collage है सबका। So you mentioned that you've highlighted about the grey area of human psychology. तो शायद वो 9 रस या 9 भाव जो हम बोलते हैं हमारे चरित्र में है, तो आप ग्रे एरिया के बारे में थोड़ा सा और हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? We all are adults here. Definitely. Can I read? Yeah, I would. Yeah, definitely. ये ग्रे एरिया पे ही है। ये ड्राबल है जो 100 वर्ड्स में लिखा है, इसका नाम है वेडिंग एनिवर्सरी। इट गोज लाइक दिस: भारती, हाउ लॉन्ग विल वी पे फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ योर पेरेंट्स? स्नैप्ड सुब्रमण्यम as Subburam and Kamakshi overheard the conversation. There's a gaping hole in our finances. We could not travel to Ooty this summer, he grumbled. It was a calculated chat by the couple, feeling the pinch in their finances since the octogenarian couple had moved into their lives. They were infirm and lonely, with no place to stay. After the day's work, the couple returned home and had to break open the door to find Bharati's parents hanging to death. It was her parents' wedding anniversary. So this is something about the grey area. Yeah. जो पहली स्टोरी है इसमें, बॉम्बे रिव्यू, इसमें इट इज़ अबाउट अनएथिकल जर्नलिज्म। तो उसमें इट्स अबाउट यू नो does God exist or does not exist? How there's a contest which was एक पेपर था, न्यूज़पेपर, जिसके सेल्स बिल्कुल गिर गए थे। तो किस तरह उसके सेल्स बढ़ जाते हैं। तो अनएथिकल जर्नलिज्म में है, तो जो नया जर्नलिस्ट आता है, जो एडिटर है, वही ये कॉन्टेस्ट खुद ही करवाता है, एंड उससे एकदम कंपटीशन, सेल्स बूस्ट हो जाते हैं। तो मेरे विचार, I was reading that one. so there is so much about the gray area, and I sincerely think because human life is such. Yes, it is. We like one saying which my mother always used to tell me, that live life like Ram but behave like Krishna. Okay. So like Karan ka personality लेंगे, his character, it is a totally grey. He was sun god's child, yet he was treated as an untouchable his whole life. Yes. But his and आप imagine कर सकते हैं जो shock 2 consecutive days उसको आता है, जब लॉर्ड कृष्णा बताते हैं कि नहीं भाई तुम एक पांडव हो, और फिर उनकी मदर भी आके उनको बताती हैं।
लेकिन वो इतना इंडेटेड है दुर्योधन को कि वो जाने को तैयार नहीं होता पांडवों को. तो that is what I feel, and how much this gray area is there in our lives. Yes. And I mean, I will request all of you to buy the copies here. Definitely, I'll that will go deeper into the grayer aspect of the personality. After the session, we'll definitely announce. So, thank you for this, sir. So, इसमें एक है India. Sorry, I'm interrupting Go you. ahead, it's okay. India Walks Alone एक इस एंथोलॉजी है जिसमें बहुत बड़े एक मिनट दिखा सकते हैं. इसमें इस एंथोलॉजी का मैं पार्ट हूँ. I have written about how Indian Railways had transported 70 lakh people during COVID. तो इसमें people like Ruskin Bond, Arundhati Roy, Mridula Garg, then I mean all top writers of India are there. So I am one of them who has awesome, written. awesome. So that has been a big challenge. Great. Sir की first book भी दिखाएंगे? The first one, yeah. This is not my first book. That's your autobiography. This is my autobiography. And story I of read faith in certain bits of it. Really, I would recommend all of you to read it once. It's a commendable book. As we are hearing his journey, which is really commendable. The book is something, it gave me goosebumps while I started reading it. Thank you. Sir, so the next question here is, what is an early experience when you learned that you had this power, and when you started writing few years back, and when you write now, have you observed any changes in your writing? Yes, in fact, there's a couple, in Chennai. He was not my boss, he's from the Indian Railway Account Service. और उनकी wife, she's a writer. वो Chief Commissioner Income Tax थी Chennai, Indian Revenue Service की. She complimented me. She said that Ravi, you are evolving as a writer. So that was a big compliment. And ये जो मैंने Art of War to Art of Living लिखी है, तो this gentleman, he was going to America. तो उनका पहले WhatsApp मैसेज मेरे को आया, Ravi, I have boarded the flight and your book is with me. I'm starting to read. And after 36 hours, he said, I've completed the book. It's fantastic. Awesome. Wow. So, that was a great feeling. One can just take your book, take a cup of coffee, and just live, have a really nice weekend and be with the book. Awesome. So, sir, young writers के लिए कोई tips, कोई सुझाव? हमारे आपके समक्ष बहुत सारे यंग राइटर्स भी हैं यहाँ पे. ये मैंने एक मेरी कहानी है जो टेल ऑफ पैरेलल्स में है. मैं रेकमेंड करूँगा कि चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में लिखें, 3 डायरीज मेंटेन करें. एक डायरी में आप 20 नए वर्ड्स रोज लिखें, 20 न्यू वर्ड्स, विच यू डोंट नो विद द मीनिंग. एंड दूसरा, एक और डायरी में कोटेशंस, राइट डाउन 20 कोटेशंस. इफ नॉट, आई एम गिविंग जो मैं लिखता हूँ, एंड इट कैन बी 10 ऑल्सो टू स्टार्ट विद. एंड एक और डायरी रखिए जहाँ आप रफ प्लॉट्स लिख सकते हैं. एंड so 3 अलग-अलग डायरीज आप बोल रहे हो मेंटेन करो. ओके, इट कैन बी ऑन कंप्यूटर ऑल्सो, एनीवेयर. यस. 3 डायरीज. So one is words, one are quotations, one are your thoughts. So I think within 6 months your book will be ready. Wow. सबको फॉर्मूला चाहिए और शॉर्टकट चाहिए, तो सर ने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया. थैंक यू. सर, what were your probably what were your favorite magazine while you were growing up? My favorite newspaper पहले बताता हूँ, बस द स्टेट्समैन, जो आजकल मिलता नहीं है. यहाँ तो नहीं है. दिल्ली में था ट्रिब्यून, स्टेट्समैन सब. The quality of English is very good. Yes. Then Hindu. Then of course we used to read. तब एक आता था Sunday करके, MJ Akbar used to edit it. Then I used to read because for civil services, Frontline, India Today वगैरह ये सब पढ़ा था. But I remember the noted philosopher Jiddu Krishnamurti, he used to say that just read Times and Newsweek, that you will learn so much from it. Exactly. Thank you. Any favorite novel apart from your own? Walter Isaacson is one of my favorite authors. His book on Steve Jobs, his book on Einstein,
Then right now I'm reading the book on Oppenheimer. Abhi wo movie has Yes, come. It's a Netflix fantastic mein hai wo movie. So I'm reading that book. So reading is very essential before writing. And you should see the world, should see the personalities. I mean, you find characters all around you. Great. Any particular, you mentioned a lot of characters, but one character that has always excited you since you became a writer till now? Any one particular character? I mean, Could be a fictional or could be a non-fictional, any character. I've Or is it you yourself? No, that is. I have been really influenced by the personality of Karna. Karna. Because he could have had everything, yet he doesn't. So, ऐसा क्या है? That always fascinates me. Why did he choose that path? And of course, Narayana. There can't be anybody greater than Narayana. Awesome. Thank you for that. One second last question I would say here. आपकी फैमिली में और कौन-कौन है और आप रायपुर में अभी प्रोजेक्ट्स पे हैं तो हम चाहेंगे कि आप रायपुर में लोगों से और भी मिलते रहें. हाँ, बिल्कुल. तो वो तो है ही. बाकी ये कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है और कैसे लोग आपसे मिल सकते हैं और कहाँ मिल सकते हैं? हम लोग सालासर ग्रीन्स में रहते हैं. वो नंबर 3 विला में. महादेव घाट के पास जो है. हाँ, एग्जैक्टली. दूसरा मेरा ऑफिस है. Chattisgarh East Railway Limited. And I am on WhatsApp and my email is मैं दिया हुआ. I'll share my cards with you people. Okay. Then I keep writing for the Pioneer. Every Sunday So we can get you there, yeah. You can get. And about your family, like ma'am and you and? My son, he had done architecture. Then after that he did concept art from Singapore. So he's into, video gaming and that industry. He's working with Rockstar. It's a world, multinational, very Awesome. big company. और जैसा आपने बताया कि your father motivated you to join the services. What did this father do for his son? Like, you want him to become a writer like you, or do you? No, he's already in that creative line. Creative line. My daughter, she works with Lenskart. She had done her program from NIFT Bengaluru. In my mind, the biggest impact which has happened in this century has been COVID, which finds a lot of place in my writings, because that has led to a total change in the thought process of people. Pandemic and COVID, uska jo impact hua hai, people are now so much used to gizmos, WhatsApp and all other things, and of course that gives you a lot of information and also disinformation. So you have to sift through that. Yes. And we have to keep pace with technology. That is also important. Okay. And I find this book is a mirror to me and my readers. Awesome. And I would say that one has to really take care of their health, especially after this pandemic. Great. Any message for your readers? Well, buy my book. Definitely. That is one. Follow you on Instagram and buy your books. Yes. Then I was do cultivate a hobby. That's very important. It can be anything. It can be cooking, dancing, or writing, or whatever. So that's so important. Great. One last question I'm asking, sir, and then please, Priyanka, pass the mic for if anyone wants to ask any question to sir. So one last question that comes to my mind is, there's this book of yours called Magic of the Mind. The name fascinates me because I've been reading about psychology, then NLP and mind, because human beings is so complex, For example, if
X person is reacting in a particular situation, or for that matter responding, the other person in the same situation with the same, for example भाई बहन भी हैं तो वो अलग तरीके से ही उस situation में react और response करते हैं. तो आपकी जो ये book है Magic of the Mind, it has been awarded also, and we'll show that slide again. Team, put on the slide also. So sir, Magic of the Mind क्या है और वो हमको क्यों पढ़नी चाहिए? देखिए ये it's an ode to my parents. In 2019 I lost my father. At that time मैं प्रयागराज में posted था as the principal chief operations manager, North Central Railway. He succumbed to old age ailments, and in 2021, my mother, who shares her birthday with Swami Vivekananda, she had influenced me so much. She was a medical social worker. Both of us contracted COVID, and it's an ode to them, and उनके बारे में लिखा है मैंने. Okay. And various techniques of yoga, pranayama, meditation, and how to overcome the challenge of pandemic. So it's a non-fiction book, Okay. and I'm very grateful that this book has been awarded by AL Sphere. Earlier it was Asian Literary Society. Yes, Yeah, this one. now it is called AL Sphere. And Non-fiction. 16th of March, Yes. you'll be receiving the award. Yes, that's Great. right. Priyanka, just pass the mic. So over to the audience for any questions for sir, please. You can just raise your hand and. सुदर्शन क्रिया की जो रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक है उसने आई थिंक वो बैलेंस मेरी ज़िंदगी में वापस लाया. उससे ही फर्क पड़ा है, और गुरु का जो ग्रेस है उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता. एक्चुअली इसमें एक चीज आप बोलना चाहूँगी, जैसे he did the course in 2004. उस वक्त he started doing the क्रिया, उसमें सुदर्शन क्रिया एक टेक्निक है जो ऑटोपेट सिखाते हैं, तो वो स्टार्ट किया था, बट he continued drinking. ऐसा नहीं है कि तुरंत बंद हो गया, आज कोर्स किया कल बंद हो गया. He continued, and मतलब वो somehow at least वो grace था कि he did it regularly. कुछ हो ना हो regularly he would, even if he would drink after that in a day, but ये क्रिया जरूर होता था. तो उसी का I think somehow the जो effect था, ultimately it came into him and it benefited him. मैं वही चाहता था कि वो एक्सप्लेन करें कि क्या फील करते थे दर्शन के बाद, कि वो मतलब उसमें देखिए कैसे बात माइक जो लोग हमें एक दिन में लगभग 70,000 थॉट्स आते हैं, 70,000 थॉट्स, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, एंड अधिकतर नेगेटिव इन नेचर होते हैं. लेकिन सुदर्शन क्रिया ब्रीदिंग टेक्निक जो है कोई करने से आप एक स्थिरता पे पहुंच जाते हैं, वही है, वो वर्तमान में आ जाते हैं. परसेप्शन है क्रिएटिविटी और अल्कोहल. अच्छा. इतने आर्टिस्ट होते हैं ये रिवर्स का क्या खेल है, क्या उसकी क्रिएटिविटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ा? नहीं, मेरे ख्याल से मैं क्रिएटिविटी को एनहांस कर दिया. रोक देना मतलब उसके बिना तो मैं ये सब कर ही नहीं पाता, ये लिख ही नहीं पाता. बट मैक्सिमम जो एक परसेप्शन चलता है कि जितने शायर है, राइटर्स या आर्टिस्ट को जानते हैं, हाँ, वो बिना अल्कोहल के उतनी क्रिएटिविटी बाहर नहीं आती. तो आपको ऐसा लगा क्या कि अगर मैं कंटिन्यू रखता अल्कोहल तो शायद मोर क्रिएटिव होता? नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं, आप देखिए जो हमारे मोस्ट सक्सेसफुल, अगर इंडिया में ही लें, अमिताभ बच्चन शायद एक ज़माने में पीते होंगे, आई हैव नो आइडिया, लेकिन अगर ही इज़ एट द एज ऑफ 81, बाकी लोग तो उनके जो भी कंटेम्प्रेरीज हैं, शायद धर्मेंद्र ही इज 82 या 87, ये लोग जिन्होंने छोड़ दिया. और धर्मेंद्र का तो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. वो इंडिया से जा रहे थे बॉम्बे से न्यूयॉर्क, तो ही गेव अप स्मोकिंग. उसके बाद उन्होंने कभी पिया नहीं. उनका लड़का भी ही डजंट ड्रिंक. तो ये आई थिंक एक मिथ्या है कि इनफैक्ट जो बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं
जो आप सही कह रहे हैं, जैसे कुमार गंधर्व, मतलब भीमसेन जोशी, ये सब लोग अल्कोहल लेके, लेकिन हाँ, अच्छा, तो शायद वो ज़्यादा और प्रोड्यूस कर सकते थे क्रिएटिविटी, मेरे विचार से। प्रियंका, रिंकू मैम wants to. First of all, congratulations for Thank you. the launch. Thank you. And I would like to congratulate Geetu also. Thank for you. Organizing such an amazing event. As a reader, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। जब एक राइटर ये सोचता है कि मैं कुछ लिखूंगा, वो अपने शब्दों को, अपने भावों को एक बुक में कन्वर्ट करता है, तो उसका थॉट होता है कि मेरी जो ऑडियंस है या जो रीडर है, उन तक वो बात पहुँचे या वो उसको इंस्पायर करें। आपका ऐसा कोई रिमार्केबल एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, किसी रीडर का कोई कमेंट? एक का तो मैंने अभी आपको बताया है, जो मुझे ट्रिवांड्रम में मिला और मैं बुक पढ़ के वो आर्ट ऑफ लिविंग में गया। जो मैंने पहली किताब लिखी थी, मैटर ऑफ द माइंड, उसमें एक 2-3 लोगों ने जिस तरह कांटेक्ट किया, सडनली एक जगह है करनूल, आंध्र प्रदेश में, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं रोज़ सुबह वॉक पे जाता हूँ, शाम को वॉक पे जाता हूँ, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आती, तो आप बताइए मैं क्या करूं। फिर एक लेडी, देयर इज अनदर प्लेस इन आंध्रा, इट्स कॉल्ड कडप्पा, तो दैट लेडी से शी सेज मैं अपने शक्ल मिरर में देख नहीं सकती, मुझे इतने अपने चेहरा ही देख के डर लगता है, अजीब अजीब चीज़ें आती हैं, तो आपकी किताब पढ़ के मुझे कुछ मिल रहा है, आप बताइए मैं क्या करूं। Then one person rang up from तिरुपति, जहाँ लॉर्ड वेंकटेश्वरा का टेम्पल है, तो वो कह रहा था कि मुझे रोज़ लॉर्ड वेंकटेश्वरा मेरे दिमाग में आते हैं, मैं क्या करूं, क्या मैं सब छोड़ के चले जाऊं, यहीं अपना ज़िंदगी बिताऊं। तो इस टाइप का फीडबैक जब आता है तो इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग फॉर एन ऑथर। Someone has a question there. Yeah. Please अपना नाम बताएंगे और मेरा नाम दीपेश अग्रवाल है एंड मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग से कनेक्टेड हूँ। मैंने भी कोर्स किया है, 2015 में मैंने अपना फर्स्ट कोर्स किया था। तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कर्म एंड संस्कार। मैं इसके बारे में आपसे कुछ फेवर चाहता हूँ, एक्चुअली मुझे एक फेवर चाहिए। तो मैंने भी खुद 2015 में ये किया था, उसके मैंने कोर्स ऑफ विपश्यना के बाद मैंने सिगरेट और हाथ भी लगाई है, और उसके बाद जो चेंजेस मैंने लाइफ में देखे वो बहुत पावरफुल हैं। तो और जितना मैंने ये कोर्स किया और मेडिटेशन में डीप किया, तो मैं कर्मास को बहुत डीपली समझने लगा कि हम समझ नहीं पाते थे कि ये गलत है, ये सही है। बहुत डीप में समझ में आता है कि ये बोलना भी सही है, ये करना भी गलत है, या उतना ही बोल दे जिससे किसी का बेनिफिट हो। तो उसमें मुझे आजकल मतलब लास्ट 3 ईयर्स से, वैसे तो मुझे शुरू से ही नेचर से बहुत लगाव रहा है और नेचर का बहुत ध्यान रखा, लास्ट 3 ईयर्स से बहुत ज़्यादा हो गया। इवन मैंने कोई पैक्ड आइटम पूरा बंद कर दिया है लेना। जैसे ये वाटर बॉटल्स है, तो वाटर बॉटल लास्ट 10 ईयर्स से 2015 में मैंने बंद किया था। उसके बाद मैंने वाटर बॉटल परचेस नहीं किया, क्योंकि आप अगर देखेंगे, और मैंने ये फील किया है कि इंडिया में हमें अभी भी पानी खरीदने की जरूरत एटलीस्ट नहीं है। अगर मैं ट्रेन में भी ट्रैवल करता हूँ तो मुझे हर जगह पानी मिल जाता है इजिली, मैं अपनी बॉटल कैरी करता हूँ हर जगह। और वैसे ही बैग में मेरे पास टिफिन पैक करने के आइटम सब रखे रहते हैं। तो इवन मुझे एक सिंगल प्लास्टिक भी यूज करनी, मेरे कार में हमेशा बैग्स रहते हैं, तो एटलीस्ट चलो ये तो मैं कर सकता हूँ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हमें डेली लाइफ में नेचर, जैसे सदगुरु जी भी नेचर के बहुत करते हैं, उनके जो रिवर्स के चलते हैं प्रोजेक्ट्स, और उनके ये बहुत सारे, और इवन सदगुरु भी सॉइल मूवमेंट चला रहे हो, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो हमें अपनी लाइफ में, डेली रूटीन की लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि नेचर का ख्याल रखना ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कर्म है। तो वो हम कैसे इम्प्रूव करें, आप उसके बारे में कुछ लिखना चाहे तो सबके लिए काफी हेल्पफुल होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक एटलीस्ट हम छोड़े या मिनिमाइज करें, हम सोचना स्टार्ट करें एटलीस्ट। श्योर, इट्स अ गुड आइडिया। thank you, that was beautiful. Thank you. Anyone else? Darshan? Yeah. Shreya? Yeah. Sure. Sure. Thanks, sir. Yeah. So, first of all, welcome and congratulations for your first event. And Thank मुझे ये पूछना है कि तो आपने कौन से एज में बुक लिखना चालू किया, and what was your first thought? Because when you were young, you have so many
respond. I mean, young as in, working young with a family, you have so many responsibilities that, often your hobbies take a backseat. And there are, I think, there's just one person who will motivate you, but there are 99 people who will tell you, "अरे book launch क्या कर रहा है? क्या करेगा इससे? क्या क्या हो जाएगा इससे?" and all of that. So yeah, 2 questions. First, your age, and what really kept you going that I have to do this. Thank you. I started writing when I was in school, and as I had already mentioned that I had participated in those music theatre workshop with Barry John and Pankaj Kapoor and all these people. So I continued writing, and मैंने पहले एक नाटक लिखा था महाभारतीय रेल, that was on महाभारत on in Indian Railways. तो किस तरह वो होता है. Then एक हमने फिर मॉडिफाई किया था यस प्राइम मिनिस्टर को, उसको लिखा. I had written a lot of plays at that time. Then there was a big gap when I didn't write anything, and finally when I started writing on human mind, that led to me to write non-fiction work. I had learned music, classical music, so I used to sing classical music. I should have continued it further. I guess what Shreya also wants to know is, because this happened with most of us, कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कुछ नया शुरुआत करते हैं, तो हमारी कनेक्शन होती है, but there are a lot of people and situations also that come which keep us pulling down. So I guess that's what she's saying, कि आपके साथ भी ऐसा हुआ था क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. हर किसी के साथ होता है. I guess resilience is what keeps us going. We try. Yeah. So maybe I think a lot of budding writers will be here, but there will be something which will take priority over your own. No, you're right. I mean, people because human mind सबसे पहले negative देखता है. That is why I've talked about that grey thing. So you have to be very positive, and I think Dhoni comes to my mind. He's so positive. In his thinking. Or Kapil Dev. These are legends. So positivity, you have to inculcate that. उसके लिए ये तपस्या है. जी. यही बोल सकता हूँ मैं. Can I just add to this? Yeah. So from सबकी जर्नी रही है, और मेरी खुद की जर्नी से एक ही चीज़ बोलूँगी, that never give up and never give in. Never give up, and no matter what, never give in into that situation. Just keep going. Nobody, but it's just you who will stop yourself. Nobody else can stop you. Nobody else. Thank you. Yeah. Sir, first of all, thanks a lot, Geetu ma'am, कि आपने मुझे invite किया. मैं बिल्कुल सोच के नहीं आया था कि आज मुझे इतना कुछ सीखने को मिलेगा. थैंकफुल कि बहुत सारी चीजें हर आदमी अपने अपने तरीके की सीख पिक कर लेता है. हो सकता है मुझे कोई बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी होगी, वो जैन भैया को लग गई होगी, इनको कुछ बात नहीं लगी होगी, वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है. तो इट्स अमेजिंग चैट. सर 2 क्वेश्चन है मेरे. बैरी जॉन के साथ एक्सपीरियंस कैसे रहा? क्योंकि मुझे भी मौका मिला था, 3 दिन वो डांटते बहुत है ना, वो कुछ भी चिल्ला देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं. अब बैरी जॉन के साथ या पंकज कपूर से, अब आपको नहीं लगता कि आपको लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म अब खुल गए हैं जहाँ पे उस जैसे आपने वो महाभारतीय रेल बताई, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अमेजिंग हो सकते हैं. तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप बिल्कुल लिखिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट की जरूरत है. एंड सेकंड थिंग, बहुत सी बार क्या होता है, हम कुछ भी एडिट करते हैं. लाइक अगर ये शो ही हुआ है, इसको सही हम अगर शूट कर रहा है, तो गीतू मैम उसको 4 बार डांट के एडिट अच्छे से करवा सकती है और वो सुनेगा. आपके साथ एडिट में वो फ्रीडम नहीं रहती है, तो आप कैसे करते हो? एक तो मेरी वाइफ एडिटिंग तो मेरी वाइफ करती है. बैरी जॉन का आपने पूछा था, इट्स नहीं बोल नहीं पाते हो कि यार नहीं कई बार ही उसने रीराइट करवाया. ऐसी बात नहीं है. बैरी जॉन साहब के बारे में आपने बताया था, तो मतलब जो भी 8 बजे जब भी बुलाया है, 12 बजे तक रात तक नॉन स्टॉप थक जाते थे हम लोग, बट देयर वाज नो क्वेश्चन कि छोड़ के जा सकते थे. एंड पंकज कपूर साहब, ही वाज, इट वाज सो फैसिनेटिंग. मतलब वो इतना ऑब्जर्वेंट थे. एक हम नाटक कर रहे थे, बलराज पंडित करके राइटर हैं, उनकी एक
किताब जो बनी थी, नाटक था 5वां सवार. इनफैक्ट मैं को एक्टर वाज अन्नू अग्रवाल, ओके. जो आशिकी आशिकी में फेम. फिल्म. तो क्या हुआ कि उसमें एक छोटा सा सीन था, मतलब सीन नहीं था, इंसिडेंटली इट हैपेंड कि मैंने कहा यार एक सिगरेट देना, तो somebody just threw it and I started smoking. एकदम उन्होंने रोका, कहता था ओह वी शुड इसको इनकॉर्पोरेट करो प्ले में. तो आई थिंक वो उस समय जो हो रहा है, हाउ द डायरेक्टर विजुअलाइजेज एंड किस तरह करना चाहिए इन स्कूल कॉलेज वगैरह में, थिएटर पार्टिसिपेशन में, दैट वाज सो इफेक्टिव. In fact, if you don't mind, I'll just sing a line. Sure, sir. Please go ahead. Yeah, go ahead. Go ahead. I want to ask question. हाँ, please. Priyanka. साहब भी डॉक्टर हैं. You are really a versatile writer, basically. Anjali. And one part you told me regarding the alcohol. Flower or So alcohol doesn't make C2H5OH. It doesn't make you a lot of sense. So one thing in you, basically, you didn't have fear. See, whenever a person writes him, the one thing kills him is his fear. What the people are going to say, what my writing will be like that. And one of the biggest thing you had is basically your expression ratio. In a country, we don't have expression ratio. Suppose today I'll tell you something, I'll be... So to break the two things, on the fear and the expression ratio, that makes a man really a good writer, a biggest writer. And combined with the positivity. Because every time we think like negative. As sun rises in the horizon, we start with the negativity. And when we go to sleep, the negativity is still there and we sleep with that only. So these three things, but alcohol is not a very big thing. But if you drink alcohol, C2H5 makes you more time to write more. You start making double, triple. दोनों जो आगे पीछे बैठे वही बोल रहे हैं. Romanticized version of it, I can tell you. That's a very romanticized version. I used Basically, I have seen many people. my consumption of alcohol was 2 bottles of gin every day. I used to smoke 6 packets of Will's Navy Cut, and at that time, so The nicotine and C2H5 was really helping you a lot. I can tell you. I mean, I saw. I think he's a refined and a different version which ma'am and sir can definitely mention. At that time, I was posted on Ambala division of railways. I was doing inspection of a place called Khanalampura Yard, that is next to Saharanpur. तो क्या हुआ कि सडनली मैं इंस्पेक्शन में वो स्टेयर्स चढ़ने लगा और आई हैड अ सिवियर पेन इन माय चेस्ट एरिया. तो मैं नीचे आया तो डॉक्टर ने एक डायज़ेपाम का इंजेक्शन दिया, कहता है कुछ नहीं है, तुम थोड़ी देर आराम करो. तो मैं सो गया, फिर खाना खा के फिर चढ़ा एंड इतना फिर पेन हुआ. देन आई वाज ब्रॉट डाउन एंड आई वाज taken to this railway hospital of Saharanpur. My BP was some 240 by 180. So they got so scared. कहता ये क्या हो गया? फिर in a truck, I was put on a truck and under an umbrella I was taken to Saharanpur Civil Hospital. And there I was on a stretcher. And under I couldn't go in because ICU was, they were not giving me permission. So I saw that part so closely. Somebody came, one senior railway officer, and he got me admitted. That night I was there. She was not told about it. Then she came. हमें saloons होते हैं ना railways में. So she came by that, and I was so grateful to my organization that they made a special train for me. And overnight I was transported from Saharanpur to our railway hospital, Delhi. So it is. Please don't think that way. But still, that is, you didn't have you had expression ratio. So that was the important part of it. The rest of the things are okay. But expression ratio is the most powerful. It's a God gifted. It's not with everybody. Like in a school also, you write a composition, you start feeling, yaar kya likhenge. That's true.
It's a 20 marks question. You ran in a comprehension passage, and he says answer. That is CBSE. I'm talking. Yes, yes. CBSE also. Yes. You want to write? अरे क्या लिखेंगे भाई? क्या लिख देंगे तो क्या सोचेगा? That is the expression ratio. I'm telling you. That everybody doesn't have. That is the biggest thing when you want to write. Because I cannot write because I'm a fussu. Every time I think I want to write, my expression ratio just go to the negative part, you know. Yes, Zero. fear is something which one has to conquer. And I guess expression. Two batsmen come to my mind. One is Virendra Sehwag and the other is Marcus Trescotty. Marcus Trescotty was an opening batsman of England. Whenever he used to travel outside, he was gripped with fear. He just couldn't play in India. And he became a psychological wreck. Such a great batsman, but who couldn't, continue with his career. Whereas Sehwag, he used to live in the present moment. Pehli ball, even if he's beaten, next ball he'll hit for a 6. And he's the fastest scoring batsman, with an average of more than 50%. So he had no fear. But these two things are combined together. They made you a really. Thank you. I guess because Sir was writing, as he mentioned, for so many years, so the power of mind and combined with your conviction to write, and जब शायद आपके गुरुजी ने आपको वही एक affirmation मिल जाता है हमको किसी से, तो हम उस राह पे चल पड़ते हैं. शायद सर ने वही किया और आज सर वहाँ हैं जहाँ आज हम हम सबका सौभाग्य कि आज हम सर की वो बुक्स पढ़ रहे हैं जो सर ने वो गिव अप किया अल्कोहलिज्म और ये सब चालू किया. So I guess someone has a question. Yeah, thank you. Sir, I wanted to know, the book's title has a Bombay in it. So, do you have a significance important to Bombay or any place if you have? No, Bombay Review is one of the short stories in this. And I wanted to capture this ceiling bridge which connects. And these characters are all, the dark shade, somebody with greed, all kinds of human emotions. So, among the places, India is blessed with beauty, abundance. That's all I can say. There's so much to be seen in India. Thank you, sir. Thank you. Hello. Yeah. Sir, I want to ask a question. Before alcohol and after alcohol, what is the difference you felt? And what phase you liked the most? Which phase of your life you liked the most? Like in your 30s or 40s or after giving up the alcohol you liked? So that's my question. No, see, when at that time there was a period when it is social drinking that was, acceptable. But being an alcoholic is a terrible thing. It's a horrible thing. That's all I can say. Any addiction. It can be any form of addiction. It's terrible. You are a slave. Whereas you should be the master of your mind. Thank you. Thank you. So I hope anyone else for a question? Okay, because the snacks are served, I would like to invite everyone for the high tea. So one last question and then we'll... Sure, sir, sure. हाँ, सर को एक गाना गाना है. वो गाना सुनेंगे, टुकड़ा सुनेंगे और फिर आप लोग के लिए high tea arranged है. We'll proceed towards that. Sure, Sachin sir, go ahead. I'm very thankful to Geetu. She has invited me for some. जब मैं बोलूँगी फ्लावर सर को देंगे. One good thing you have shared is that everybody must have a habit of reading. So, while reading, I came across into two different terminologies I would like to share with all of you. While I was reading one book, I came to across one word. In your life, you face such a situation which either makes you strongly mentally or it will make you mentally strong. Decision is you. And one more situation tends to the past. As in life,
Many times there are two options. Maybe a hopeless end or endless hope. Decision is made. So He's a cancer fighter. And for giving me opportunity to have it. I would say that at the end of the darkness, I mean, end of the tunnel, you don't find darkness. There will be light. Yes. So we should look towards that light. Thank you. Priyanka, give it to sir. The mic to hai, sir. You can just. Yeah, sure. Go ahead. Just for a second. Sure. Go Because ahead. the audience. Sir, the whole stage is yours. I'll just. Sure. ये मैंने क्लासिकल म्यूजिक अनफॉर्चुनेटली पूरा और आगे सीखा नहीं, वो तो एक सागर है, एक छोटा सा ही है. दिस इज फ्रॉम राग भैरवी. जिया घबराए कटत नहीं रतिया, कासे कहूँ मैं मन की बतिया. जिया घबराए कटत नहीं रतिया, कासे कहूँ मैं मन की बतिया. जिया घबराए. Wow. So the mic goes to Priyanka. उससे पहले सर हम दोबारा और सुनना चाहेंगे आपको. ये वाला फेज भी और सुनना चाहेंगे. Priyanka. Okay. Before that, Darshan, please एक बार आएंगे. Can we all clap for Darshan once again? दर्शन के तो नाम में एक ही दर्शन ने. मेरी आवाज आ रही है? दर्शन ने आज हमको दर्शन दिए. So. तो आपने बुलाया ही आज. So let's just honor him for this kindness. Thank you so much. My pleasure. My card. Sure, please. हाँ, sure. Jayendra sir, एक बार आप आइए. Now I would like to request Jayendra sir to please come and मैं इंट्रोडक्शन सर की सिर्फ इतना दूंगी कि छत्तीसगढ़ में एजुकेशन मैंने इनसे समझा और सीखा जब मैं दिल्ली से छत्तीसगढ़ आई. और बहुत बड़े दिग्गज हैं सर, और बहुत कुछ हम पूरी मतलब जब भी उनसे मिलना होता है, कन्वर्सेशन होती है, चैट होती है, तो कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है. और सर अभी माइंड थ्योरम के ऊपर और बहुत सारे विषयों पे बात करते हैं. तो मैं चाहूँगी कि सर ज़रूर हम पूरे क्राउड को एक संदेश दें रिगार्डिंग माइंड. एंड इफ़ यू कैन ऑल्सो जस्ट ऑनर दिस टू सर सो दैट ही रिमेंबर्स अ स्मॉल टोकन. अगर आप ये भी सर को हमारी तरफ से. थैंक यू सो मच. थैंक यू. माइक देंगे जयेंद्र सर को. And after this, I request everyone to please proceed for the snacks, and we can also have the book swap. We should take a picture? Yeah, sure. After this, yeah, sure. We'll take a picture. Yeah. You want me to speak? Please, sir. Over to you. Thank you. I'll give mine. वो तो क्या बनेगा? अच्छा, ओके, कैमरे. सर का दिन है. मैं सिंपल रिलेट करना चाह रहा था इसी चीज से. जो मेरे गाइड थे न्यूरो साइंस के पीएचडी के प्रोफेसर को नहीं गुजारा. उनकी दो कंट्रीब्यूशन है ब्रेन लैंग्वेज में, इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन. हम जब कोई वर्ड बोलते हैं, डायनासोर एक वर्ड बोला तो आपके दिमाग में पिक्चर, स्पेलिंग नहीं, दैट इज इमेजिनेशन. और दूसरा, हम उसके बाद उस वर्ड को एसोसिएट करते हैं, शायद मूवी का, जुरासिक पार्क का, या बचपन में जो बुक पढ़े हुए लंबा, या आवाज उसका. ये दो ब्रेन की लैंग्वेज है. जब मैं अपना थीसिस के लिए उनके पास गया था तो मुझे करीब 35 डेज उनने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखने के लिए कहा था. सेम हमने कहा, मैं उस चीज से बस मेरा क्वेश्चन होता वो आपसे, क्योंकि सर ने कहा कि हम रोज एक 20 शब्द करीब करीब एक डायरी में लिखे हैं तो हमारी वोकेबुलरी अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है, नो डाउट. बट वो मुझसे 35 दिन लिखवाए उसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए. मुझे बहुत
टफ हुआ। उनमें मुझे वो 100 वर्ड यूज आया, उन्होंने कहा कि वो जो आप लिख रहे हो 5000 वर्ड का मुझसे लिखवाते थे रोज, और वो 100 वर्ड्स से ज्यादा कोई दूसरे वर्ड्स नहीं होने चाहिए। मुझे 35 दिन लगे थे। तो सिंप्लीफाई करने में जितनी ताकत और जितनी मेहनत लगी एक्सप्रेशन के लिए, कि आप कम से कम शब्दों में कितने अच्छे ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो एक टफ टास्क था। तो बुक लिखने के लिए हमको ज्यादा शब्द चाहिए या कम शब्द चाहिए? क्योंकि जितने कम शब्दों का उपयोग होगा, जितने सरल शब्दों का उपयोग होगा, उतना ज्यादा दूर तक आपके ऑडियंस जो होते हैं, जो पाठक होते हैं, उन तक वो बातें समझ पाती हैं। और सारी चीजें, चाहे वो 5th 6th क्लास से जब बच्चा शब्द पढ़ना चालू करता है और आखिरी तक, वो जितने सिंपल होंगे उतने दूर तक वो पढ़ पाएगा, समझ पाएगा और उम्र के हर दौर को उसके साथ रिलेट कर पाएगा। मेरा बस एक हम्बल सा एक सबमिशन था कि क्या वो पॉसिबल है, वो बेटर वे है? नहीं, बिल्कुल दोनों हैं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जो शतरंज के खिलाड़ी जो इतनी फेमस मूवी बनी है, वो प्रेमचंद जी की सिर्फ 3 पेजेस की स्टोरी है, जिसपे सत्यजीत रे ने पिक्चर बनाई। तो ये जो क्वेश्चन था जो मेरे से पूछा गया था, was about new emerging जो लिखना चाहते हैं, तो that was a suggestion which I gave, which I had followed. That's all. Thank you so much, sir. Thank you. Priyanka has an announcement and she would like to do the closing. Then we all can gather here for a picture and then for the food. Thank you so much, everyone. You've been a brilliant audience. Thank you. And a warm welcome to my life partner, Rajat Rathod just walked in. So, thank you for coming.